Okay, you cannot minimize Zoom when you are recording this meeting. हाँ, क्या हुआ तो फिर? अच्छा, शेयर करना है. So, are you able to hear? Are you able to see my screen? Yes, yes. Okay, okay. तो हम लोगों ने ये कर लिया था कि हम लोगों ने ये देखिए, ये इतनी बड़ी एक हम लोगों ने नंपाई की एरे बनाई और यहाँ पे दो, तो यानी कि ये एक लाइन है थोड़ी सी मोटी सी है. और हम लोग अगर 3x3 का पिक्सल चला रहे हैं तो 3x3 का ये वेट हम लोगों ने जनरेट कर दिया है. ये फाइनल वेट है, यानी कि प्रिडिक्ट करते वक्त भी ये 3x3 का ही वेट लेता है. तो हम लोगों ने मॉडल डॉट ये डिटेक्टर मॉडल डॉट सेट वेट में वेट ये डिटेक्टर नाम दिया और इसको नंपाई का एरे बनाया एज एरे 0.0 और ये बीटा नॉट है. ये डिटेक्टर्स क्या है? बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा 9 है. बीटा नॉट है, इसको वेट्स नाम दिया. मॉडल डॉट सेट अंडरस्कोर वेट्स, मॉडल डॉट सेट अंडरस्कोर वेट्स. एक सेकंड जरा. तो फिर मॉडल डॉट प्रिडिक्ट में डेटा डाला, मॉडल डॉट सेट वेट, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट डेटा डाला वाई हैट. अब फॉर लूप चलाया इन रेंज वाई हैट डॉट शेप 1 और इसको ये नंबर ऑफ सैंपल्स, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ चैनल्स फॉर सी इन रेंज. तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा प्रिडिक्ट किया इसने. ठीक है, तो ये एकदम स्क्रैच से हम लोग समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इमेज क्या है और उसके चैलेंजेस क्या है, इमेज को कैसे समझना है ना. In the previous section, we defined a single filter with the size of 3 pixels high and 3 pixels wide, row column. We saw that the application of the 3x3 filter referred to as kernel size in Keras to the 8x8 input image resulted in a feature map with a size of 6x6. 3 3 6 3 3 6 और ये 8x8 की डाला था 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 6 7 8 and resulted into a image of 6x6. Result, we saw that the application of 3x3 filter referred to as the kernel size in Keras to the 8x8 input image resulted in a feature map with the size of 6x6. That is, the input image with 64 pixels was reduced to a feature map with 36 pixels. Where did the 28 pixels go? दोस्तों सवाल है कि वो 28 पिक्सल 2 रोज के वो कहां गए? 8 4 8 1 8 2 16 7 2 14 7 3 10 13 8 7 15 7 4 28 समझिए. The filter is 6 दूनी 12 और 8 8 16 16 और 12 28. ठीक है, 28 पिक्सल कहाँ गए? The filter is applied systematically to the input image. It starts at the top left corner of the image and is moved from left to right 1 pixel column at a time
until the edge of the filter reaches the edge of the image. अब देखिए, for a 3x3 pixel filter applied to a 8x8 input image, we can see that it can only be applied 6 times, resulting in the width of 6 in the output feature map. For example, let's work through each of the product. कहने का मतलब है कि हमारा जो by default जो है, ये 3x3 का चला 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, ये 6 ही बार हुआ, इसीलिए हमें 28 पिक्सल नहीं हम कैलकुलेट कर पाए। तो ये सिंपल चीज हम लोग जानते ही हैं। The reduction in the size of the input to the feature map is referred to as border effect, यानी बॉर्डर के जो 0 0 है उसको हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, जिसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कन्व 2D फंक्शन के अंदर क्या फीचर होता है मुझे याद नहीं आ रहा, उसको वैलिड की जगह सेव कर देते हैं। The feature map is referred to as border effect. It is caused by the interaction of the filter with the border of the image. This is often not a problem for large images and small filter, but can be a problem with small images. तो अगर आपकी इमेज छोटी है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। It can also become a problem once a number of convolutional layers are stacked. For example, below is the same model updated to have 2 stacked convolution layers. This means that a 3x3 filter is applied to the 8x8 input image to result in 6x6 feature map. As in the previous section, a 3x3 filter is then applied to 6x6 feature maps. ठीक है, एक फीचर मैप बना रहे हैं 3x3 का, तो 6x6 है तो आई थिंक 4 ही बन पाएगा। वो देखिए, ये 4x4 की एक मैट्रिक्स आपको मिली, फिर 2 लाइनों का नुकसान हो गया। इफेक्ट ऑफ फिल्टर साइज, तो देखिए डिफरेंट साइज्ड फिल्टर, डिफरेंट साइज्ड, अलग अलग साइज के जो फिल्टर्स है विल डिटेक्ट डिफरेंट साइज्ड फीचर्स इन द इनपुट इमेज and in turn will result in differently sized feature map. It is common to use a 3x3 sized filter and perhaps 5x5 or even 7x7 sized filters for larger input image. For example, below is an example of the model with a single filter updated to use a filter size of 5x5 pixels. Now, example of a convolutional layer from keras.models import sequential, from keras.layers import conv 2D. Sequential is equal to model, model.add conv 2D 1, 5x5, input underscore save is equal to 8x8 1. Summarize model, model.summary. Running the example, demonstrate that a 5x5 filter can only be applied to a 8x8 input image 4 times, resulting in a 4x4 feature map output. There must be 4 आधे का ही नुकसान लगभग हो जा रहा है। It may help to further develop the intuition of the relationship between filter size and the output feature map to look at 2 extreme cases. The first is the filter with a size 1x1 pixels for more of a 1x1 filter. अब देखिए यहाँ पे 1x1 का ले रहे हैं, 8x8 का, तो हमें रिजल्ट में 8x8 का मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं 8x8 का ले रहा हूं तो देखिए मुझे एक ही बार मैं कर पा रहा हूं, 1x1 की एक फीचर मैप मिली। नाउ दैट वी आर फेमिलियर with the effect of filter sizes on the size of the resulting feature map, let's look at how we can stop losing pixels. Fix the border effect problem. Fix the border effect problem with padding. Fix the border effect problem with padding. By default, a filter start at the left of the image
By default, a filter starts at the left of the image with the left side of the filter sitting on the far left pixel of the image. The filter is then stepped across the image one column at a time until the right hand side of the filter is sitting on the far right pixel of the image. An alternative approach to apply a filter to an image is to ensure that each pixel in the image is given an opportunity to be at the center of the filter. यानी ऐसा फिल्टर साइज बनाइए कि हर एक पिक्सल सेंटर में आ जाए. By default, this is not the case as the pixels on the edge of the input are ever exposed to edge of the filter. By starting the filter outside the frame of the image, it gives the pixel on the border of the image more of an opportunity for interacting with the filter, more of an opportunity for features to be detected by the filter, and in turn, an output feature map that has the same shape as the input image. For example, in the case of applying a 3x3 filter to the 8x8 input image, we can add a border of 1 pixel around the outside of the image. This has the effect of artificially creating a 10x10 input image. When the 3x3 filter is applied, it results in an 8x8 feature map. The added pixel values could have the value 0, value that has no effect with dot product operation with filter. तो इसको क्या करना है? The addition of pixel to the edge of the image is called padding. ये हम लोग बहुत बार जान चुके हैं. Default value of valid, no padding. This means that the filter is applied only to valid ways to the input. The padding value of same, जब आप पैडिंग का तरीका सेम लिखते हो, इट कैलकुलेट्स एंड ऐड द पैडिंग रिक्वायर्ड टू इनपुट इमेज. अब देखिए यहाँ पे क्या है, वो फीचर का नाम है इनपुट का पैडिंग. मैंने सेम कर दिया तो वो अपने से 0 इनपुट डाल देगा और कैलकुलेट कर देगा. ठीक है, तो हजारों बार डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन हो गया. देखिए हर बार पैडिंग सेम, पैडिंग सेम, पैडिंग सेम. डाउन सैंपल इनपुट विद स्ट्राइड. अब देखिए इनपुट के डेटा को हम डाउन सैंपल कैसे कर सकते हैं. डाउन सैंपल इनपुट विद स्ट्राइड. द फिल्टर इज मूव्ड अक्रॉस द इमेज लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम. ठीक है, पता है, विद 1 पिक्सल कॉलम चेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, then a 1 pixel row change of the vertical movement. The amount of movements दोस्तों between applications of the filter to the input image is referred to as the stride. एक बार में एक कदम मूव करना है. And it is almost always symmetrical in height and width dimension. वही जो कर्नल मूव करता है राइट में, फिर एक स्टेप डाउन, फिर एक स्टेप राइट में कंप्लीट, जिसको हम लोगों ने देखा कि कर्नल साइज, पैडिंग वाइट एंड पैडिंग सेम, पैडिंग सेम और वैलिड. तो देखिए द अमाउंट ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड स्ट्राइड एंड इट इज almost always symmetrical in height and width dimension. The default stride or strides in 2 dimension is 1 by 1. अब डिफॉल्ट क्या है? स्ट्राइड जो है 2 डायमेंशन में 1 by 1 है दोस्तों, एक बार में एक. is 1 by 1, 2 is 1 by 1 for the height and the width movement performed when needed, and this default works well in most cases. The stride can be changed, which has an effect both on how the filter is applied. एक सेकंड दोस्तों, जरा चश्मे में कुछ हो गया है.
देखिए, and this default works well in most cases. The stride can be changed, which has an effect both on how the filter is applied to the image and in turn the size of the resulting feature map. यानी कैसे कैसे आपकी स्ट्राइड जब आप कर्नल में मूव कर रहे हो इधर से इधर, अगर आप ये 3 3 by 3 का चला, अगली बार 2 कदम यानी 1 और 2 छोड़ के फिर यहाँ पे 3 चले, तो बीच में आप एक बार तो लिया लेकिन दूसरी बार इस डेटा को नहीं ले रहे हो। ठीक है, for example, the stride can be changed to 2 by 2. This has the effect of moving the filter 2 pixels left of each horizontal movement of the filter. एक सेकेंड, प्रियंवदा, प्रियंवदा मुझे 2 मिनट दीजिए, कॉल आ गई है इंपॉर्टेंट। ठीक है।
Okay, Priyamada, am I audible? हाँ Are you there? हाँ हाँ। हेलो। Am I audible? हाँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके, मैंने हेडफोन नहीं, ईयरफोन नहीं लगाया है। ओके, सॉरी 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 सॉरी। अच्छा। चलिए चलिए। हम्म। मुझे दूर से कहीं आवाज आई कि हल्का सा कोई बोला हाँ। मैंने कहा अरे ये कैसे हो रहा था, मैंने देखा अरे मैंने कान ही में नहीं लगाया है। चलिए चलिए। तो स्ट्राइड हम कर दे, यानी कि जब हम यहां से एक एक, जब कर्नल चला रहे हैं 3x3 का, तो एक मूव कर रहे हैं। अगर दो दो मूव करे या तीन तीन मूव करे तो क्या हुआ, एक तरीके से आप डाउन सैंपलिंग कर रहे हो, यानी बीच में कुछ डेटा को नहीं ले रहे हो। This has the effect of moving the filter 2 pixels left from each horizontal movement of the filter and 2 pixels down for each vertical movement of the filter when creating the feature map. We can demonstrate this with an example using a 8x8 image with vertical left and down. We can see that there are only 3 valid applications. 3x3, अब 8x8 के पिक्सल में केवल हमें 3 वैलिड मिल रहे हैं, 3x3 फिल्टर्स to the 8x8 input image with a stride of 2. This will be same in the vertical dimension. This has the effect of applying the filter in such a way that the normal feature map that the normal feature map output, that is 6x6, is downsampled so that the size of each dimension is reduced by half, that is 3x3, resulting in 14, the number of pixels 36 pixels down to 9. The stride can be specified in Keras on the curve 2D layer via the stride argument and specified as a tuple with height and width. The example demonstrates the application of our manual vertical line filter on the 8x8 input. तो ये मैनुअल वर्टिकल एक मोटी सी जो लाइन है यहाँ पे हमारी, ये वाली बीच में, ये थोड़ा सा इधर हो गया है, ये थोड़ा सा इधर है, तो इस पे हम लोग चलाते हैं 3x3 का पिक्सल स्ट्राइड 2x2। और हम लोगों ने मॉडल डॉट समरी किया तो ऐसा आ गया डिक्टेटर, ये हम लोगों ने वेट जनरेट किया 3x3 का। वेट्स में एज एरे 3x3 का वो वेट्स रखा एज एरे, ये बीटा नॉट बायस्ड मॉडल डॉट, ये मॉडल था तो मॉडल डॉट सेट अंडरस्कोर वेट्स, ये हमारा मॉडल है। मॉडल इज सिक्वेंशियल मॉडल डॉट एट कर्व 2D, और मॉडल डॉट सेट अंडरस्कोर वेट्स, तो इसमें वेट्स रख दिया। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, इसमें डेटा डाला तो ये बन गया वाई हैट। अब दोस्तों फॉर लूप चला इन रेंज वाई हैट डॉट सेप 1, और ये प्रिडिक्ट किया तो ये देखिए 3x3 की पिक्सल आई और ये सिंगल लाइन आई। क्या किया हमने, डाउन सैंपलिंग की। देखिए तो क्या है दोस्तों, स्ट्राइड के साथ डाउन यानी नंबर ऑफ सैंपल्स आप कम कर रहे हो, ठीक है। चलिए, we can see from the summary of the model that the shape of the output feature map will be 3x3. Applying the handcrafted filter to the input image and printing the resulting activation feature map, we can see that indeed the filter still detected the vertical line and can represent this finding with less information. Downsampling may be desirable in some cases where deeper knowledge of the filter used in the model or of the model architecture allows for some compression in the resulting feature map. अब आते हैं दोस्तों पूलिंग, एक एक चीज को डिटेल में पढ़ रहे हैं। पूलिंग कैसे काम करता है, मैक्स पूलिंग, ठीक है। कन्वोल्यूशन लेयर इन कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क समराइजेस द प्रेजेंस ऑफ फीचर्स इन एन इनपुट इमेज। अब देखिए, ए प्रॉब्लम विद द आउटपुट फीचर मैप इज दैट they are sensitive to the location of the features in the input. बहुत सेंसिटिव होते हैं लोकेशन ऑफ, sensitive to the location of the features in the input. अब इसकी एक अप्रोच ये है कि one approach to address this sensitivity is to down sample the feature map, ठीक है, कि हम डाउन सैंपल कर दें।
One approach to address this sensitivity is to downsample the feature map. देखिए दोस्तों, this has the effect of making the resulting downsampled feature maps more robust. भाई मैक्स पूलिंग से भी क्या करते हैं, पूलिंग से भी हम लोग डाउन सैंपल ही करते हैं. Feature map, more feature down sample feature maps more robust to the change in position of the features in the image, referred to by technical phrase local translation invariance. Pooling layers provide an approach to downsampling feature maps by summarizing the presence of features in patches of the feature map. The two common pooling methods are average pooling and max pooling that summarize the average presence of a feature and the most activated presence of a feature respectively. In this tutorial, you will discover how the pooling operation works and how to implement it in convolution neural network. So, a pooling convolution layer in a convolutional neural network systematically apply learned filters to input images in order to create feature maps that summarize the presence of those features in the input. तरीके क्या है, एवरेज पूलिंग, मैक्सिमम पूलिंग, और हम लोग जनरल मैक्स पूलिंग यूज करते हैं. चलिए आइए डिटेक्टिंग वर्टिकल लाइंस, हम वर्टिकल लाइंस को डिटेक्ट करते हैं. Before we look at some example of pooling layer and their effects, let's develop a small example of an input image and convolutional layer to which we can later add and evaluate pooling layer intentionally based on the example from the previous chapter. Now, in this example, we define a single input image or sample that has one channel and is an 8 pixel by 8 pixel square with 0 values and 2 pixel wide vertical line in the center. अब 2 pixel vertical line in the center में. As array data, इसको हमने नाम दिया data. Data dot reshape 1, 8 by 8 by 1. Next, we can define a model that expects input samples to have the shape 8 by 8 of one channel and has a single hidden convolutional layer with single filter with shape of 3 pixel by 3 pixel. तो देखिए sequential curve 2D 1 3 by 3 activation ReLU input sequence. The filter is initialized with random weights. तो अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक weights generate किया, model dot set underscore weight, ठीक है, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट किया तो ये आ गया. 3 by 3 का पिक्सल चलाया था, हाँ, तो अरे सॉरी 3 by 3 का चलाया था, तो ये a given number of rows and column and one filter or batch row column filter, we can predict the activation of the single feature map to confirm that line was detected. तो ये लाइन डिटेक्ट हो गई है दोस्तों. Tying all this together, ये कर्व 2D 1 3 by 3 का हम लोगों ने चलाया तो हमें केवल 3 by 3 का पिक्सल मिलेगा दोस्तों. 2 3 4 5 सॉरी 6 by 6 का, ठीक है, लाइन डिटेक्ट हो गई है. चलिए, running the example, first summarize the structure of the model. Of note is that the single hidden convolution layer will be 8 by 8 pixel input image and will produce a feature map with a dimension of 6 by 6. Average pooling layer. तो एवरेज पूलिंग लेयर क्या है, जब हम पूल करेंगे दोस्तों तो यहां पे अब क्या है कि स्ट्राइड एक एक जगह नहीं, अब मैंने जैसे मैट्रिक्स है हमारी, ये देखिए, तो अगर मैं घूमा यहां से यहां तो एक एक नहीं जाएगा. ये मान लीजिए 3 by 3 का यहाँ पे एवरेज पूलिंग 2D लगाया है और बाय डिफॉल्ट आई थिंक 3 by 3 का अगर है हाफ हो गया तो 3 by 3 का है. तो देखिए 1 2 3 3 by 3 ये इतना एरिया, ये 3 0 इधर का छोड़ दीजिए, ये 3 by 3 लिया. जब मैक्स पूलिंग में क्या होता है कि ओवरलैप नहीं करेगा,
कि एक एक स्ट्राइड आगे घूम रहा है। अब ये वाले 3x3 आएंगे, ये 3x3, और इसका एवरेज वैल्यू मैप करेगा एक जगह पे, फिर इसका एवरेज वैल्यू मैप करेगा एक जगह पे। देखिए कैसे, ये हो गए आपके इतने थ्री, ये इतने 3x3, इसका एवरेज, एवरेज ऑफ दैट मैप हुआ ये। अब इसको छोड़ दो, ये 3x3 हो गया यहाँ पे, और ये 3x3 हो गया यहाँ पे, तो 3 हो गया। अब नीचे भी स्ट्राइड नहीं करेगा। पहले तो हम लोग फिल्टर कर रहे थे, फीचर्स निकाल रहे थे। यहाँ पे देखिए 1 2 3, 1 2 3 4, 3 3 6 7 8, ये 3x3 का इसने ये निकाला यहाँ पे, फिर ये 3x3 का निकाला, यानी कि 2x2 चल रहा है दोस्तों, तभी ऐसा हो पाया है। तो ये एवरेज निकाला और ये एवरेज पूलिंग ऐसे निकल गई। अब ये बन गई आधी हो गई दोस्तों। यही होता है, इसमें ओवरलैप नहीं होता है पूलिंग में। और क्या है, ये भी एक तरीका है डाउन सैंपलिंग का। ठीक है, तो ये देखिए, तो इसको हम लोग रन करते हैं तो ये 3x3 का हमें मिलता है। देखिए, ओ बाय डिफॉल्ट 2x2 का पूल साइज है दोस्तों, बाय डिफॉल्ट पूलिंग 2x2 का है, पैडिंग वैलिड है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। एवरेज पुलिंग वर्क्स वेल, मैक्स पुलिंग लेयर, मैक्स पुलिंग लेयर हम जनरली यूज करते हैं। ये देखिए मैक्स पुलिंग 2D, ताकि ये 3x3 चल रहा है तो इसमें एवरेज मत लो, इसमें जो सबसे स्ट्रांग फीचर है उसको, यानी जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू उसको उठा लीजिए। यहाँ पे जो है जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो उठा लीजिए, इस तरीके से। ग्लोबल पूलिंग लेयर, there is another type of pooling that is sometimes used, and it is called global pooling. Instead of downsampling patches, of the input feature map, input के feature maps की downsampling करो। global pooling downsamples the entire feature map to a single value। अब ग्लोबल पूलिंग क्या है, वो डाउन सैंपल कर देगी एंटायर फीचर मैप टू सिंगल वैल्यू। This would be the same as setting the pool size to the size of the input feature map. Global pooling can be used in a model to aggressively summarize the presence of a feature in an image. It is also sometimes used in model as an alternative to using a, अच्छा देखिए क्या है, this would be the same as setting the pool size of the input feature map. Global pooling can be used in a model to aggressively summarize the presence of a feature in an image. It is also sometimes used in the model as an alternative to using a fully corrected layers to transition from feature maps to an output prediction from the model. Both global average pooling and global max pooling, ठीक है, are supported by Keras via the global average pooling 2D and global max pooling cluster. For example, we can add global max pooling to the convolution model using the vertical line detection. तो ये देखिए हम लोगों ने ग्लोबल पूलिंग लगा दी, और ग्लोबल पूलिंग लगाने के बाद एक लगाया। देखिए ग्लोबल पूलिंग का मतलब हो गया दोस्तों, इस पूरे इमेज से जो यहां से लेयर का रिजल्ट आया 3x3 वाला, उस पूरे में से जो एक मैक्स वैल्यू है सिर्फ वो निकालना, ग्लोबली उसकी पूल करना। ठीक है, एवरेज होगी तो एवरेज और कंप्लीट होगी तो कंप्लीट।
तो दोस्तों ये हमारा डीप लर्निंग का फंडामेंटल्स पार्ट और कंप्यूटर विजन का पहला शीट खत्म हो गई है। कोई सवाल पूछना है तो आप पूछिए, एल्स वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नहीं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग आ गए यहाँ 2 पे। 1 हम लोग ने कर लिया। सब 40 पॉइंट की क्यों है, डेटा परफॉर्मेंस टेंसरफ्लो डेटा है, ये है 2 है, ये 4.6। देखते हैं क्या था। 5.4 MB सबसे ज्यादा यही था। 2 है 2.61 MB। डॉग ब्रीड आइडेंटिफिकेशन ऑन कैगलनेट। लेबल सैटेलाइट फोटो विद मल्टी क्लास एंड मल्टी लेबल डॉट IPY। अच्छा, ये कह रहे हैं लेबल करो सैटेलाइट फोटो विद मल्टी क्लास एंड मल्टी लेबल डॉट IPY। ये क्या है भाई? Understanding the image from space। 1 2 3 और ये 4 भी है। 2.23 है। 3 सबसे बड़ा है क्योंकि उसमें इमेजेस वगैरह होंगी। अब आ जाते हैं ये। चलिए, अब आते हैं, ये क्या है, बुक्स एंड वीडियो विद सब्सक्रिप्शन पैकेट ऑनलाइन डेवलप डीप लर्निंग कंप्यूटर विजन 2। अब आते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण, अब देखिए प्रेम, आपको यह समझना होगा कि बहुत महत्वपूर्ण चीजें अब हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए ये जो आर्किटेक्चर है ना, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का, इन सब का हम लोग आर्किटेक्चर बना रहे हैं। ठीक है, अब आर्किटेक्चर बना रहे हैं तो कितनी लेयर लगानी है, फिर मैक्स पुलिंग कब लगाना, कब ड्रॉप आउट लगाना है। और पहले भी आप लोगों ने देखा, आपने देखा होगा कि जब मैं फंडामेंटल्स ऑफ डीप लर्निंग करा रहा था तो मल्टीपल जगहों से चीजें आ रही थी, मल्टीपल मल्टीपल स्ट्रीम न्यूरल नेटवर्क, फिर उसको कंकैटिनेट कर रहे थे और बहुत सारे काम कर रहे थे। दोस्तों इन्हीं सब चीजों के बीच में कुछ बड़े ही फेमस आर्किटेक्चर हैं जिन्होंने इमेज रिकॉग्निशन को स्टैब्लिश किया है। इसी में इमेज नेट है, ILSVRC एक कंपटीशन है। तो हम लोग वही पढ़ेंगे दोस्तों, इमेज नेट, ILSVRC एंड माइलस्टोन आर्किटेक्चर्स। तो क्या है माइलस्टोन सबसे सफल आर्किटेक्चर, इनको सुनना, इनको जानना और इनको लिखना सीखेंगे पहले। देखिए, the rise in popularity and use of deep learning neural network techniques can be traced back to the innovations in the application of convolution neural networks to image classification tasks. Some of the most important innovations have sprung from submissions by academics and industry leaders to the ImageNet large scale visual recognition challenge। इसको क्या बोला, ILSVRC, इमेज नेट लार्ज स्केल विजुअल रिकॉग्निशन चैलेंज। इमेज नेट लार्ज स्केल विजुअल रिकॉग्निशन चैलेंज, या फिर ILSVRC। ILSVRC is an annual computer vision competition developed upon a subset of a publicly available computer vision dataset called ImageNet. As such, the task and even the challenge itself is often referred to as the ImageNet competition. In this tutorial, you will discover the ImageNet dataset, the ILSVRC, and the key milestone in image classification that have resulted from the competitions. After reading this tutorial, you will know the ImageNet dataset is a very large collection of human annotated, इंसानों के द्वारा एनोटेट किया गया कि इस इमेज में क्या है, designed by academics for developing computer vision algorithms. The ImageNet large scale visual recognition challenge, or ILSVRC, is an annual competition that uses subset from the ImageNet dataset and is designed to foster the development and benchmarking of state-of-the-art algorithm. ILSVRC tasks have led to milestone model architectures and techniques in the intersection of computer vision and deep learning.
चलिए, ImageNet dataset क्या है? Is a large dataset of annotated photographs intended for computer vision research. The goal of developing the dataset was to provide a resource to promote the research and development of improved method for computer vision. We believe that a large-scale ontology of images is a critical resource for developing advanced, large-scale content-based image search and image understanding algorithms, as well as for providing critical training and benchmarking data for such algorithms. Based on statistics about the dataset recorded on the ImageNet, dataset recorded on the ImageNet homepage, there are a little more than 14 million images in the dataset. A little more than 21,000 groups or classes called synsets, and a little more than 1 million images that have bounding box annotations. For example, bounding boxes around identified object to the images. The photographs were annotated by humans using crowdsourcing platform such as Amazon's Mechanical Turk. The project to develop and maintain the dataset was organized and executed by collocation between academics at Princeton, Stanford and other American universities. तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये पहला ImageNet लार्ज स्केल विजुअल रिकॉग्निशन चैलेंज में ये ImageNet का जो एल्गोरिदम है, सबसे पहले विजन ज्योमेट्री ग्रुप आया था 2014 के आसपास, जिसने बड़ी सफलता प्राप्त की थी। और इन लोगों ने क्या किया कि इमेजेस को मैनुअली एनोटेट किया, और अभी के तौर पे करीब 1 मिलियन इमेजेस हैं जो कि मैनुअली एनोटेटेड है। ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, or ILSVRC for short, is an annual computer vision competition है दोस्तों, held in which challenge task use subset of the ImageNet dataset, जिसमें कि हम ImageNet dataset का एक सबसेट लेते हैं और उस पर काम करते हैं। The goal of the challenge was to both promote the development of better computer vision techniques and to benchmark the state of the art. The annual challenge focuses on multiple tasks for image classification that includes both assigning a class level to an image based on the main object in the photograph and object detection that provides localizing object within the photograph. ILSVRC annotations fall into one of two categories: image level annotation of a binary level for the presence or absence of an object class in the image, and two, object level annotation of a tight bounding box and class level around an object instance in the image. The general challenge tasks for most years are as follows: image classification, predict the classes of object present in an image; single object localization, image classification, draw a bounding box around one example or each present; object detection, image classification, draw a bounding box around each object present. More recently, and given great success in development of technique for still photographs, the challenge task are 10,000 और ये सब चीजें हैं। अब डीप लर्निंग माइलस्टोन क्या है? ILS were dramatic, perhaps even shocking to the field of computer vision. Success has primarily been achieved by large deep convolution neural network on graphical processing unit, which sparked an interest in deep learning and extended beyond the field out into the mainstream. तो ये देखिए 2013 है, 2014 है, जेफनेट, क्लैरिफाई, इंसेप्शन। देखिए ILSVR के इंसेप्शन आर्किटेक्चर आया दोस्तों। देखिए ये कुछ आर्किटेक्चर प्रियमदा, देखिए जेफनेट, ये क्लैरिफाई 2013 का सफल है। मैथ्यू जीलन एंड रॉब फर्ग्यूसन proposed a variation of AlexNet, generally referred to as JeffNet, in 2013 paper titled Visualizing and Understanding Convolution Network, a variation of which won the ILSVRC 2013 image classification task. 2014 में गूगल नेट या इंसेप्शन नाम का आर्किटेक्चर बहुत फेमस हो, यानी वही कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क से अलग अलग वेरिएशन। VGG 2014 में आया कैरन सिमोन एंड एंड्रू जीजरमैन फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड विजन। ऑक्सफोर्ड VGG का मतलब होता है ऑक्सफोर्ड विजन ज्योमेट्री ग्रुप। VGG मतलब विजन ज्योमेट्री ग्रुप।
इनके नेटवर्क आया 2015 के रिसर्च पेपर में। 2015 में रेजनेट आया, MSRA Camming He et al. From Microsoft Research achieved top results for object detection and object detection with localization tasks. How milestone model architecture innovation work. अब आइए दोस्तों, convolution neural network works are comprised of two very simple elements, namely convolution layer and pooling layer. Although simple, there are near infinite. अब देखिए कन्वोल्यूशन लेयर, पूलिंग लेयर, यही सबका कॉम्बिनेशन है। अब देखिए इस पे कितने लेयर लगने हैं, हर लेयर पे कितने तरीके से लगने हैं, इसके अनगिनत तरीके हैं, मतलब इन्फिनिटी का भी इन्फिनिटी वेज है। Arrange these layers for a given computer vision problem. Fortunately, there are both common pattern for configuring these layers and architectural innovation that you can use in order to develop very deep convolution neural network. Studying these architectural design decisions developed for the state-of-the-art image classification task can provide both a rationale and intuition for how to use these designs when designing your own deep convolution neural network. तो आप इनसे समझ सकते हैं कि किस दिशा में बढ़ना चाहिए. How to pattern the number of filters and filter sizes when implementing convolution neural network. How to arrange convolutional and pooling layers in a uniform pattern to develop well-performing model. How to use the Inception module and residual module to develop such deeper convolution network. Architectural design for CNN. अब हम इस ट्यूटोरियल को 6 हिस्सों में तोड़ते हैं दोस्तों. आर्किटेक्चरल डिजाइन फॉर CNN, LeNet 5, AlexNet, VGG, Inception या गूगल नेट, रेसिडुअल नेटवर्क या ResNet. तो देखिए इन 6 को पढ़ना है हमें अब दोस्तों, इनके ढांचे को. आर्किटेक्चरल डिजाइन फॉर CNN, LeNet 5, AlexNet, VGG, Inception, गूगल नेट, रेसिडुअल, ResNet. तो देखिए आर्किटेक्चरल डिजाइन फॉर CNN. The elements of a convolution neural network, such as convolutional and pooling layers, are relatively straightforward to understand. The challenging part of using convolution neural networks in practice is how to design model architectures that best use this simple element. A useful approach to learning how to design effective convolutional neural network architectures is to study successful applications. कैसे डिजाइन किया जाए? तो जो सफल हो चुके हैं आर्किटेक्चर है, उनसे हमें कुछ सीखना और समझना चाहिए. विशेष तौर से इंटेंस स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ CNN थ्रू 2012 एंड 2016. इन वर्षों में हमने पाया कि इमेज नेट लार्ज स्केल विजुअल रिकॉग्निशन चैलेंज जो है, जिसे हम ILS VRC भी कहते हैं, दिस चैलेंज रिजल्टेड इन बोथ द रैपिड एडवांसमेंट इन द स्टेट ऑफ द आर्ट for very difficult computer vision tasks and the development of general innovation in the architecture of convolutional neural network model. We will begin with LeNet 5. This is often described as the first successful and important application for CNNs prior to the ILS VRC. Then look at our different winning architectural innovations for CNNs developed for ILS VRC, namely AlexNet, VGG, Inception, ResNet और LeNet. अब इनको हम समझेंगे दोस्तों. By understanding these milestone models and their architecture or architectural innovation from a high level. और इसको देखकर समझकर आप अपना भी डेवलप कर सकते हैं. You will develop both an appreciation for the use of these architectural elements in modern application of CNNs in computer vision and be able to identify and choose architecture elements that may be useful in the design of your own model.
आइए देखते हैं लीनेट 5 पहला आर्किटेक्चर। अब देखिए, perhaps the first widely known and successful application of convolution neural network was LeNet 5। इसका विवरण हमें यानली कुन देते हैं अपने 1998 के पेपर में, जिसका नाम है ग्रेडियंट बेस्ड लर्निंग अप्लाइड टू डॉक्यूमेंट रिकॉग्निशन। अब ये जो व्यवस्था थी, ये इसका उन्होंने विकास किया था एक हैंड रिटेन कैरेक्टर रिकॉग्निशन प्रॉब्लम को लेकर, हस्तलिखित कैरेक्टर रिकॉग्निशन प्रॉब्लम, एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड ऑन द एमनिस्ट स्टैंडर्ड डेटा सेट, achieving approximately 99.2% classification accuracy or 0.8% error rate. The network was then described. एक सेकंड। The network was then described as the central technique in a broader system referred to as graph transformer network. ठीक है, it is a long paper and perhaps the best part to focus on is section 2 that describes the LeNet 5 architecture. In that section, the paper describes the network as having 7 layers with input is 7. The paper describes the network as having 7 layers with input grayscale images having the shape of 32 by 32. तो ये हस्तलिखित एमनिस्ट डेटा सेट का ये कुछ इंग्लिश में लिखा है। इन्होंने उसके बाद 7 लेयर बनाई फीचर मैप 28 बाय 28 पिक्सल की। अब पहली बार हमारे पास 32 बाय 32 की थी, यानी कि पैडिंग इन्होंने वैलिड रखा, यानी वैलिड पैडिंग लो, और कुछ इन्होंने 2 बाय 2 या 3 बाय 3 का फीचर कर्नल साइज लिया होगा। ये 28 बाय 28। इसके बाद देखिए हम लोगों ने इसकी मैक्स पूलिंग की दोस्तों, तो ये आधा हो गया, 14 बाय 14 का हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने फिर से कन्वोल्यूशन लेयर लगाया और इस बार हम लोगों ने 16 फीचर मैप बनाए 10 बाय 10 के। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने फुल कनेक्शन कर दिया, यानी फ्लैटन किया इसे, और ये देखिए हम लोगों ने इस पर डेंस की लेयर लगा दी, और ये आउटपुट है 10 कुछ लेटर्स से आउटपुट 10। The size of image in the average data set, the model proposes a pattern of a convolution layer followed by an average pooling layer. इसके बाद इन्होंने ये जो लगाई है average pooling, referred to as a subsampling layer. This pattern is repeated 2.5 times. Just a second. अब देखिए, this pattern is repeated 2.5 times before the output feature map are flattened and fed to a number of fully connected layers for interpretation and a final prediction. A picture of the network architecture is provided in the paper and reproduced below. ये पिक्चर है दोस्तों जो मैंने बता दिया। The pattern of block of convolution layer and pooling layer मैंने बता ही दिया वो आपको। अब आते हैं AlexNet। AlexNet, the work that perhaps could be credited with sparking renewed interest in neural network and the beginning of the dominance of deep learning in many computer vision application, was the 2012 paper by Alex Krzyzewski titled ImageNet Classification with Deep Convolution Neural Network. अब देखिए, the paper describes a model later referred to as AlexNet designed to address the ImageNet large scale visual recognition challenge or ILSVRC.
2010 का। For classifying photographs of object into one of 1000 different categories, the ILS-VRC was a competition designed to spur innovation in the field of computer vision before the development of LeNet. अब ये जो काम था वेरी डिफिकल्ट था एंड फार बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर विजन मेथड। 1000 भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करना था। LeNet ने सफलतापूर्वक डिमॉन्स्ट्रेट किया द कैपेबिलिटी ऑफ द convolution neural network model in the domain and kindled a fire that resulted in many more improvement and innovations. तो आइए देखते क्या थे। ये देखिए इन्होंने क्या किया दोस्तों, इमेज का इन्होंने एक टुकड़ा लिया, इसको मैप किया 224 by 224 की in this case split two pipelines to train on the GPU. अच्छा, in this case split two pipeline to train on GPU. दो पाइपलाइन है, यानी कि ये कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क चला, ये फीचर मैप बनाया हमने, इसको एक बार देखते हैं क्या है। द मॉडल हैज 5 कन्वोल्यूशन लेयर। ये देखिए यहाँ पे आके ये दो पैरेलल चल रहे हैं दोस्तों, समझ रहे हैं, और यहां फाइनल पे जाके कंकैटिनेट कर रहे हैं, यानी एक ही इमेज। अब सिंपल समझिए, एक इमेज लिया, उसके फीचर मैप बनाए, और दो उसी इमेज से एक दूसरी लाइन निकाली, उसके फीचर मैप बनाए। इसके फीचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं 128, इसके फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और इनका फीचर ऐसे चलता चला जा रहा है। फिर ये क्या कर रहे हैं कि ये कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट निकाल रहे हैं। LeNet, थोड़ा इसको पढ़ते हैं दोस्तों। The model has 5 convolutional layers in the feature extraction part of the model and 3 fully corrected layers in the classifier part of the model. एक सेकंड दोस्तों का बात। ठीक है दोस्तों, देखिए, the model has 5 convolutional layers in the feature extraction part of the model and 3 fully corrected layers in the classifier part of the model. Input images were fixed to the size of 224 by 224 with 3 color channels. In terms of the number of filters used in each convolutional layer, the pattern of increasing the number of filters with the depth seen in LeNet was mostly adhered to, in this case, the size
96 filters of 256 by 384 image, 384. And 256. Similarly, the pattern of decreasing the size of the filter with depth was used, starting from the smaller size of 11 by 11 and decreasing to 5 by 5 and 3 by 3 in the deeper layers. यहाँ पे 5 by 5 की मैक्स पूलिंग की गई है। ये क्या है? With depth was used, starting from the similarly, the pattern of decreasing the size of the filter with depth was used, starting with the smaller size of 11 by 11 and decreasing 5 by 5 and then 3 by 3 in the deeper layers. Use of small filters such as 5 by 5 and 3 by 3 is now the norm. अच्छा, ये कह रहे पहले देखिए, ये 11 बाई 224 बाई 224 की इमेज है। पहले ये 11 बाई 11 का कर्नल साइज चला रहे हैं। फिर इसके बाद इन्होंने 5 बाई 5 का कर दिया और फिर कर्नल साइज 3 बाई 3 का चल दिया और 2 चैनल चला रहे हैं। दोनों चैनल से फिल्टर करते हुए लास्ट में जोड़कर फाइनल रिजल्ट ला रहे हैं। ठीक है, तो ये है कहने का। अब आता है दोस्तों विजन ज्योमेट्री ग्रुप। द डेवलपमेंट ऑफ डीप कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क फॉर कंप्यूटर विजन टास्क appear to be a little bit of a dark art after Alex. An important work that sought to standardize architecture design for deep convolution network and developed much deeper and better performing models. In the process was the 2014 paper titled Very Deep Convolution Network for Large Scale Image Recognition by Karen Simonian and Andrew Gisserman. Their architecture is generally referred to as VGG after the name of their lab. उनके लैब के नाम पे उनके मॉडल का नाम था विजन ज्योमेट्री ग्रुप। Visual Geometry Group at Oxford. Their model was developed and demonstrated on the small ILS VRC competition. In this case, ILS VRC 2014 version of the challenge. अब देखिए इनका ये नेटवर्क था ABCD 11 वेट लेयर, 13 वेट लेयर। अच्छा, ये इनके मॉडल थे। विजन ज्योमेट्री ग्रुप का एक था 11 लेयर, 13 लेयर, 16 लेयर एंड 19 लेयर्स। आरजीबी इमेज एक 24 बाय 224 की कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क 60। इसमें जो है ये वाला, इसमें ये और इसमें कर्व 3 64, कर्व 3 128 और इसमें इतनी लेयर है जोड़िए। The design decision in the Vision Geometry Group model have become the starting point for simple and direct use of convolutional neural network in general. Finally, the VGG work was among the first to release the valuable model weight under a permissive license that led to
trend among deep learning computer vision researchers. This in turn has led to the heavy use of pre-trained models like VGG in transfer learning as a starting point on new computer vision tasks. We can summarize the key aspects of the architecture relevant in the modern model as well. Use of a very small convolution filter 3 by 3 and 1 by 1 with the stride of 1. Use of max pooling with the size of 2 by 2 and a stride of the same size. The importance of stacking convolutional layer together before using a pooling layer to define a block. अब इन्होंने एक ब्लॉक सिस्टम लगाया कि यानी कोई भी फिल्टर करने से पहले, मैक्स पूलिंग करने से पहले ये 2-3 लेयर को स्टैक कर दे रहा है आपस में और इसको बोलते हैं ब्लॉक. Dramatic repetition of the convolution pooling block pattern. Development of a very deep 16 to 19 hidden layers of model. हेलो. हाँ हाँ प्रियम बता. मैं बोल रही थी कि हम लोग थोड़ा 10 मिनट के लिए ब्रेक ले लें. तो 10 मिनट नहीं, अभी देखिए 40 हो रहा है, 12 बजे 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं. ठीक है. ठीक, 12 बजे मिलते हैं.
Okay, Priyamvada, are you there? Yes, Priyamvada, are you there? Yes. प्रियंवदा आज का रहने दे, कल करे। ठीक है। ठीक है, 1:30 बजे मिलते हैं। अच्छा ठीक है। हम्म। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लिया जाए। हम्म।